Hello, good evening. If you can hear me, please type yes. Good evening, good evening. All right, am I audible? Please type yes if I'm audible. Super. All right, just give me a second and we are going to start with the end of week analysis. All right, so apologies. Generally, we do this on a Friday uh, evening at 7 p.m. But due to some technical reason, we did not have network issue. Sorry, we did not have network. There was network issues, and hence we had to postpone it till tonight. So I'm gonna do this pretty quickly so that you don't have to spend your Sunday or the entire Sunday listening to me, and hopefully you'll get something out of this. All right, so let's begin. It's important that we do this completely. All right, let's start with Adani Enterprise. All right, so Adani Enterprise, we had spoken about this. So let me go to the weekly chart here. So on my left hand side, I've got a weekly chart. On my right hand side, I've got a daily chart. Same setup. So of course, left hand side, we had a bearish divergence throughout and we were looking to sell short. And we did get amazing opportunity. So this, if you look at my extreme right chart, मैंने यहाँ पे एक आर्ली चार्ट प्लॉट कर रखा है. So you see that was a lot of money that we got from this short sell trade. Now of course शॉर्ट सेल हुआ, फिर अब ऊपर जा रहा है. क्या ये एक करेक्शन है, क्या ये एक जस्ट बाउंस बैक है ईएमए तक एंड देन वील गेट अनदर अपॉर्चुनिटी? वेल, if you see here, we've got a bearish divergence in the early chart, but we need Monday to kind of confirm this. So we plot your WCPR here, and if it goes below, then of course you know what to do. All right. However, I think if Monday is more of a slow day and gives you like a poor candle, and then Tuesday onwards गिरता है, तो वो भी I think better रहेगा. But of course you need confirmation to this information कि भाई हाँ गिरना है, वो गिरना है बचाए, क्योंकि ये 315 का टिक डाउन है which is not relevant. इसका मतलब पहला कैंडल अगेन मंडे हमें कंफर्म करेगा, तभी हम इस पे इवन डिसीजन ले पाएंगे. ऑलराइट, सो दिस इनिशियली वुड बी इन माय शॉर्ट सेलिंग सेटअप कि यहाँ पे क्योंकि हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये गिर चुका है, अब वापस यहाँ करेक्शन ईएमए तक आएगा, ईएमए से फिर एक गिरने का अपॉर्चुनिटी दे सकता है. ऑलराइट, देन वी हैव Bajaj Finance. Now, Bajaj Finance, you can see there's a very shady bullish divergence here. However, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेली में एक बुलिश डाइवर्जेंस है विद अ 012 लाइक अ पुल बैक हियर. ठीक है, तो इसको मैं अगर मेजर करता हूं 61.8, and then of course if I plot a target to it, then this should be somewhere which is the weekly moving averages. This should be something that is that could come. However, ये 012 का कंफर्मेशन आना जरूरी है, विच अगेन अगर हम आर्ली चार्ट को खोलते हैं तो आप देखो, अगर मंथली सीपीआर के ऊपर जाता है देन वो ज्यादा अच्छा कंफर्मेशन रहेगा समवेयर हियर. बट आई थिंक दैट वुड बी ऑलमोस्ट लाइक अ टारगेट. लेट्स ड्रॉ दिस. हाँ, इतना बचेगा टारगेट के लिए, या आप WCPR को भी यूज कर सकते हो, बट आई ऑलवेज प्रेफर इफ इट्स अबव द MCPR यू कैन यूज द WCPR देन. ऑलराइट, हाउएवर 012 इसका कंफर्मेशन है, इसके ऊपर जाने से बेटर रहेगा. वहीं पे मेरा अलर्ट सेट है, बट आई कैन विल सी कैसा जाता है मंडे. ऑलराइट,
Also realize that since 26 February कोई भी वीकली हाई नहीं टूटा है, तो लोअर विक्स बहुत हैं, आप देखो नीचे की तरफ ज्यादा विक्स हैं, तो इसका मतलब जब भी ये नीचे प्राइसेस जा रहे हैं, बुल्स कम्स बैक एंड पुश द प्राइसेस ऑन द हायर साइड। तो अगर इसका हाई टूटता है वीकली हाई विच इज फ्राइडेज हाई आई बिलीव, अगर वो टूटता है तभी भी हम इसको कर सकते हैं, रिस्क हमारा ऑफ कोर्स सीपीआर यूजिंग लगाएंगे। देन वी कम टू तो ये हमें अगेन शॉर्ट सॉरी बाइंग अपॉर्चुनिटी में ये हम इसको रख देंगे। देन वी कम टू ब्रिटानिया। Now, Britannia, you can see it is at the moving average in the weekly chart. You see there's an engulfing bull. There was a doji earlier and all that. Beautiful candle setup. And daily, maybe there was a bullish divergence. Now there's a triple bullish divergence. You can see another bullish divergence. Or Friday ko confirmation aaya tha. Isme bhi, if you see my alert is above the MCPR. If I go back to the early chart, look at this. It is above the MCPR. And I think if it goes higher, then I'm going to use that instead of the WCPR. It is just more reassuring in falling markets to have the prices go above it, close and all that. You know what to do about after that. Okay. So Britannia again, because there's a nice bullish divergence here at weekly EMA, this seems like a long setup. फिर हम आते हैं बिरला सॉफ्ट पे। नाउ बिरला सॉफ्ट, वंस अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड, कोई भी प्रीवियस वीकली हाई नहीं टूटा है अभी तक। अगेन लास्ट टाइम हैमर था, उसका हाई नहीं टूटा। इस बार वी गॉट अनदर रिजेक्शन कैंडल व्हिच बेसिकली मींस, आप विक्स देख रहे हो सब नीचे की तरफ है, व्हिच बेसिकली मींस पीपल आर डाइंग टू एंटर ऑन द बाइंग साइड। नाउ अगेन थर्सडे को पूरा रिजेक्शन कैंडल खा गया, देयर इज अ पियर्सिंग पैटर्न, एंड इसके ऊपर हाई के ऊपर गया नहीं, सो देयर इज नो कंफर्मेशन टू द इंफॉर्मेशन। सो फर्स्ट इसके हाई के ऊपर जाना चाहिए। अगर हम आरडी चार्ट को लेते हैं एंड लेट्स अज्यूम दैट कि हम बुलिश हैं, I'm just assuming this. Let's see if I can draw a trend line also, to be honest. Yeah, there you go. Trend line भी यहाँ पे. So let's say we are bullish here. So we can use this WCPR. But again मेरा मानना ये है कि अगर monthly CPR के ऊपर जाए तो better रहेगा ना। monthly CPR के ऊपर अगर जाएगा, so you see there, मैं daily chart में भी दिखाता हूँ, या RD चार्ट में अगर आपको ये दिख रहा है रेजिस्टेंस, लेट मी जस्ट मेक इट थिकर। ये वाला जो जोन है, लेट मी जस्ट चेंज कलर टू लेट्स से ग्रीन, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो अगर इसको भी तोड़ता है ना, देन ऑल्सो आई एम लाइक प्रीटी कॉन्फिडेंट। एंड इवन इफ द ट्रेंड लाइन ब्रेक्स, आइदर ऑफ दिस, इट जस्ट डिपेंड्स कैसे टूटता है। अगर गैप अप से कुछ भी टूट रहा है, देन दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ बेनिफिट, अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। बट अगर गैप अप से कुछ नहीं हो रहा है, देन मे बी वेटिंग इज ओके। जैसे मैंने कहा पहले भी कि अगर आप थोड़ा सा वेट कर लोगे और थोड़ा लेट एंट्री करोगे, वो आपका इंश्योरेंस होता है। सो डोंट वरी अबाउट एंटरिंग लेट, वरी अबाउट एंटरिंग रॉन्ग ट्रेड्स। ऑलराइट, सो दैट इज बिरला सॉफ्ट। अगेन बुलिश डाइवर्जेंस है, तो इसको भी हम लॉन्ग साइड पे ही रख लेंगे। फिर हम आते हैं चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट। नाउ चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट अगेन एक सपोर्ट लेवल पे है। यहाँ पे एक बुलिश डाइवर्जेंस था जो कि फेल हुआ, नाउ इट कम्स बैक, 012 का प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और अगेन इसका मंथली सीपीआर बहुत दूर है। सो अगेन इस पे भी आप क्या कर सकते हो, यू कुड प्रोबेबली ड्रॉ यूजिंग दिस रिजेक्शन लेवल और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हियर, और इस लेवल के ऊपर ही इंटरेस्ट दिखाना। अगेन आई एम आस्किंग यू टू डू दिस बिकॉज यहाँ पे बहुत अनसर्टेनिटी है अभी मार्केट में, एंड यू नीड टू काइंड ऑफ बी वेरी कंफर्म्ड कि आपको कौन सा ट्रेड लेना है। सो आई थिंक दिस might wait for another week to give you a good trade, but again nonetheless if it goes back up, आप ले सकते हो, ठीक है। सो इसको मैं नथिंग मच में ही रहने देता हूँ, बिकॉज अभी मैं इसमें ज्यादा कंपेयर टू अदर ट्रेड्स आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट हियर। देन वी कम टू आयशर मोटर्स। नाउ आयशर मोटर्स, वी गॉट अ बुलिश डाइवर्जेंस। यू कैन सी यहाँ पे ऊपर गया, नीचे सीआईपी करने आया था, फिर ऊपर गया, फिर आया। जब ये सीआईपी करने आया था, तब हमारे पास एक छोटा सा डाइवर्जेंस था which took the prices higher. Then there's a bearish divergence which took the prices lower. Now again at EMA we've got a bullish divergence in Aisha Motors. uptick है, उसका high नहीं टूटा है। Again if I bring in the monthly CPR here, so you can see monthly CPR is wide, इसका मतलब ये इसी के बीचों बीच fluctuate होगा। So maybe not the best time to enter, but again if you have more confirmation, if you have कि हाँ भाई नहीं, I can use the narrow WCPR, I'm okay to take that risk, that you can judge. So you can categorically divide your trades कि भाई ये A कैटेगरी ट्रेड है, ये B कैटेगरी ट्रेड है, या ये C कैटेगरी ट्रेड है, और फिर आप मेरे हिसाब से A कैटेगरी ट्रेड को ही चूज करो। ऑलराइट, सो वंस अगेन इफ इट गिव्स यू अ फॉलो थ्रू एंड गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी ऑन द अपसाइड, लिया जा सकता है। बट अगेन
choose your categories. Okay, so Aisha Motors भी लॉन्ग पे है, ये भी लॉन्ग पे ही था, मैं इसको लॉन्ग पे रख देता हूँ, बट वो मजा नहीं है जो पहले के सेटअप्स में था. Now Havells India, this is purely a classical charting setup. यहाँ पे आप देखो एक बड़े white candle से टूटा, follow through नहीं दिया, and it's come back. So in the daily chart you can see breakout comes back. If I zoom in, zoom out, sorry, you can see there's a resistance. यहाँ पे टूटा था, फिर ये यहाँ तक आ गया है CIP के लिए. इंगल्फिंग बुल बना, हाई नहीं टूटा. So again we are waiting for some kind of confirmation. तो अगर हम आर्ली चार्ट खोलते हैं, so you see, I want a confirmation now. If the prices are above EMA or a broader EMA or broader CPR, you can see there's a narrow CPR here in the weekly chart, and we can probably use this to enter positions. Now, अगर मैं पिछले बार की CPR लगाऊंगा, आप देखो, ठीक है, सबके नीचे था. जब ये वाइड था, ये नैरो था, इसके नीचे ही रहा. अभी नैरो है, अगर इसके ऊपर जाता है, then I think this also may be best again to wait for the daily highs to break and all of that for more confirmation. But यहाँ पे setup है, ठीक है, this is purely on change in polarity setup, and for that again, because there's a bearish candle, I think Monday will give you like a confirmation or some kind of a setup, and then Tuesday onwards maybe you can take a call what to do with this stock. ठीक है, तो ये क्लासिकल चार्टिंग पे है, तो इसको भी हम एक बार रख देते हैं, जस्ट डिवाइडिंग शॉर्ट सेल में कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज है. फिर हम आते हैं HDFC बैंक पे. ना HDFC बैंक वेरी इंटरेस्टिंगली नीचे आया था, यहाँ पे हमारे पास बुलिश डाइवर्जन था, यू कैन सी दिस राइट. ये एक टेस्ट दिया और ये ऊपर गया. ना HDFC बैंक का ये वाला जो लेवल है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख रहे हो जहां पे ये अभी है, ठीक है, दो चीजों के लिए. एक तो यहाँ पे एक ऑलमोस्ट लाइक अ हेड एंड शोल्डर का सेटअप है. दूसरा, यहाँ पे मेक और ब्रेक काइंड ऑफ सिचुएशन है. क्यों? क्योंकि ये एक वीकली EMA तक आया, पहले गिरा, फिर धीरे धीरे वीकली EMA तक आ रहा है. वीकली EMA पे वेरी शेडी बेरिश डाइवर्जेंस बना हुआ है डेली चार्ट में, रेजिस्टेंस पे है, बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे. तो मैं HDFC बैंक पर्सनली आई थिंक आई वुड ओनली बाय अबव दिस हॉरिजॉन्टल लाइन. सो इफ आई जस्ट मेक दिस बिगर, है ना, और अगर आपको ये दिख रहा हो, मैं इसको थोड़ा और बड़ा करता हूँ, ये वाला जो लाइन है ना, लेट मी चेंज कलर सो दैट यू अंडरस्टैंड. मैं ग्रीन कलर करता हूँ, ठीक है. ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, और यहाँ से गिरा, फिर यहाँ पे आया है, यहाँ पे डेली में एक मतलब नॉट द बेस्ट बट है, और यहाँ पे एक R1 भी है, रेजिस्टेंस भी है. तो या तो ये इसके ऊपर जाए और फिर मैं इंटरेस्टेड हूँ बाय करने का, और या इसके नीचे गिर जाए, और इसके नीचे गिरने के लिए हमारे पास एक ट्रेंड लाइन भी है, ठीक है. सो लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस प्रॉपर्ली. Okay, so either it kind of like breaks below this and then you're okay to like test and fall, or it goes above it. So I'm going to draw this, what I'm trying to say. So either it goes here CIP and goes higher, this is what I'm interested in after the breakout, or it goes here CIP and goes down. So I'm either of them I'm interested in. Mera abhi, according to the setup that we follow, it looks more like on a short sell side, but anything can happen, of course. Okay, so 0 1 2 3 3 पे divergence and then fall. So if I just make this visible in daily also, this is what I'm saying, right? So and it makes a lot of sense, to be honest. Let me just refine this. Makes a lot of sense. So HDFC Bank को मैं short sell के side रख देता हूँ. Then we've come to ICICI Pru. Now ICICI Pru again आप देख सकते हो, हमने ये पहले भी बात किया था कि यहाँ है, यहाँ तक आना चाहिए, क्योंकि एक हेड एंड शोल्डर बनाएगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है. सो वीकली चार्ट में आप देखो, शोल्डर हेड शोल्डर रेजिस्टेंस, देयर इज नो बेरिश डाइवर्जेंस हियर, लेकिन कैंडल बुरा है, मतलब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया है. नाउ इफ आई गो टू द डेली चार्ट, यू सी हियर डेली चार्ट में भी एट मूविंग एवरेज, मतलब इट्स गॉन अप, रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस लिया और ये मूविंग एवरेज तक आया. अब हमें इंटरेस्ट है आरडी चार्ट पे, तो आरडी चार्ट में आते हैं. सो आप देखोगे MCPR के ऊपर है, सो आई एम लुकिंग फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटीज इन एनी केस, एंड दिस वे आई हैव गॉट द न्यू CPR, नॉट द मोस्ट नैरो CPR आई हैव, बट नैरो है. इसके ऊपर जाने से एटलीस्ट ये लेवल तो आ ही सकता है, एंड इफ इट ब्रेक्स हायर देन नथिंग लाइक इट, ठीक है. बट अगेन यू नीड कंफर्मेशंस, ओके, कंफर्मेशंस ऑन अ डेली लेवल, लाइक इसका हाई टूटना, CPRs के ऊपर जाना, गैप अप हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है, बट ऑलवेज रिमेंबर देयर इज अ रेजिस्टेंस, एंड वहां से गिरा तो है, बहुत अच्छा नहीं गिरा है, दिस इज नॉट द बेस्ट डार्क क्लाउड कवर दैट यू हैव.
So be careful. We would like to look for a buying opportunity if we get one in this. Then we come to Kotak. Kotak Mahindra Bank में there is a weekly bullish divergence. Now weekly bullish divergence है, उसके हाई के ऊपर मेरा अलर्ट लगा हुआ है. एंड अगर आप देखो डेली चार्ट में, so there's a bullish divergence with a pullback which looks like a 012, right? And hopefully if it breaks out on the upside. ठीक है, तो आपको दिख रहा है 012 टारगेट ये लग रहा है. अगर ये 012 फाइनली होता है, तो अगर मैं आर्ली चार्ट पे जाऊंगा, मेरा अलर्ट तो लगा हुआ है क्योंकि ये शोल्डर हेड शोल्डर भी है, अलर्ट भी लगा हुआ है. अगर हम आर्ली चार्ट में जाएंगे तो आप देखोगे, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ एंड इसको थोड़ा सा, so monthly CPR wide है, so we're gonna use the weekly CPR. Now we can definitely see there's a point of interest here. ये support था, resistance बना, then resistance है, shoulder head shoulder है, and if it breaks out with a gap up, which is a narrow, very narrow thin line CPR, अगर gap up से टूटता है या something, so I think this could be a good plan on the upside, all right, or worth taking risk if you know, because look at the slanting line as well, look at that trend line. ठीक है, तो ये एक अच्छा प्लान हो सकता है. Head and shoulder breakout and this, both. All right, so Kotak Bank, I think I'm going to look for buying opportunity, but all of this will only make sense अगर ये confirm होता है Monday को. ठीक है, अगर ये confirm होता है, अगर confirm ही नहीं हुआ, let's say it opens gap down or something, then we're just waiting. And now we're just waiting. There's nothing to do here. All right, so ये था हमारा Kotak Bank. बहुत सुंदर सेटअप है, दिख भी रहा है अच्छा अच्छे तरीके से, बट वो ब्रेकआउट होना, वो कंफर्मेशन होना जरूरी है क्योंकि यहां से बार बार गिर रहा है. फिर हम आते हैं लॉरस लैब्स पे. Now Lotus Labs, if you see here on the weekly chart, एक point of interest था which was support, lower highs बना रहे थे. So you see ये एक हाई बनाया, फिर ये लोअर हाई, फिर ये लोअर हाई, and finally breakout. Now it's come back to test it at this level. यहां से फिर नीचे गिरा, जहां पे वीकली में ट्रिपल बेरिश डाइवर्जेंस था, नीचे गिरा एंड इट हैज कम बैक अप अगेन. ऑलराइट, सो नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि यहाँ पे प्लान क्या रहेगा, या जो लग रहा है देख के कि कैसा होना चाहिए. सो इफ यू सी हियर देयर इज अ डाइवर्जेंस, केम बैक, पुल बैक, इंगल्फिंग बेयर बना हुआ है. अब मैं इसका अगर रिट्रेसमेंट बनाता हूं, सो लेट्स ड्रॉ रिट्रेसमेंट ऑन द वीकली चार्ट. You see the pullback is still 78.6, which is fantastic, right? Very, very good level. Now, अगर हम डेली चार्ट में आते हैं, बिकॉज हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, सेलिंग यहाँ पे देखो आप, बहुत शेडी सा एक डाइवर्जेंस है विच आई जनरली डोंट कंसिडर, बट बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ सेटअप वी हैव, देखना पड़ रहा है. नाउ द ओनली थिंग हियर इज the low of the engulfing bear should break, which is the low of this hammer that has been made. So maybe Monday is like a silent day and then उसका लो टूट के ये फॉलो थ्रू हो सकता है. उसके लिए हम प्लान के लिए हमें आवली चार्ट खोलना होगा. लेट्स प्लान इट आउट प्रॉपरली, है ना. सो इसको हम ऐसे बनाते हैं. आई थिंक दिस इज अ बेटर ट्रेंड लाइन. If I have to make one instead of this, let's make a parallel channel, है ना. एंड इसको थोड़ा सा इसका थिकनेस कम करके इसको ब्लैक कर देते हैं. 0 1 1 2 2 breakout. All right, now the problem here is, as I said, there's a bullish divergence in the early chart, so हो सकता है ये थोड़ा सा ऊपर जाए, मे बी एक दो कैंडल शांत होके एंड फिर कुछ अपॉर्चुनिटी दे. सो वही अपॉर्चुनिटी का वेट करना है हमें कि या तो ये ऊपर जाके यहाँ टेस्ट करे one of these levels and then give you an opportunity, or goes below the MCPR once again and gives you an opportunity. Either way, you need to kind of wait for it. I think it has gone below MCPR. It'll just it'll take resistance from the WCPR and give you an opportunity if it has to, है ना. तो let's go back to the daily chart. As I said, कि हो सकता है कि मंडे एक थोड़ा सा शांत वाला दिन होगा. Maybe it comes back here, consolidates near the moving average in the daily chart, and then gives you an opportunity on the downside to prove a 012 in the weekly chart. I mean, that would be the plan. So because it has that kind of setup, it goes in my short selling opportunity. Then we have LTTS. Now, if you've not already entered this, because हमने ये last time भी discuss किया था, there was a trend line here, S1 पे there was a bullish divergence in LTTS, and
फ्राइडे को एंट्री था क्योंकि गैप अप खुला, टेस्ट किया एंड एंट्री दे दिया. फॉर ऑल द एंट्री ऑफ कोर्स यू apply the setups that we had discussed last time. At EMA, hammer, engulfing bull, follow through, everything is good. Monthly CPR narrow है, अगर इसको अभी भी जारी रखना है तो ये ऊपर जाएगा और ऊपर आपको देगा. Now the problem here is the wide weekly CPR, so maybe it can come back here, stick around for a couple of days and then give you an opportunity also. So that in that case आपको daily candles का मदद लेना होगा and you'll have to wait for Monday to finish kind of a thing. All right, otherwise I think you need to like kind of wait for a resistance to break, usko test hone ka and all that. So opportunity of course buying side zyada hai in this list, but confirmation के लिए हो सकता है एक दो दिन वेट करना पड़े अगर मंडे का रिवर्सल गैप वैप से नहीं आया तो. Then I have polycab. Now polycab again very interesting. इसमें सबसे इंटरेस्टिंग ये बात है कि प्रीवियस लो जो है वो टूट नहीं रहा है. ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी दिस, हमने ये लाइन बनाया था लास्ट टाइम, आपको डेली में भी दिखा देते हैं इसको. लेट्स मेक इट विजिबल इन डेली. इट इज विजिबल. लेट्स मेक इट सिंक इन डे आउट. ऑलराइट, सुपर. सो इफ यू सी द डेली पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ब्रोक विद अ गैप और इसको टेस्ट करने गया है, वेज के अंदर चल रहा है. सो 1 0 1 2 3 3 पे डाइवर्जेंस एंड यू आर वेटिंग फॉर अ ब्रेकआउट. नाउ वेटिंग का ये चक्कर है कि अभी तक कभी भी यहां से लेके इतना ऊपर चला गया लेकिन कोई भी वीकली लो नहीं टूटा है. So that is very important. We did get into this. I did get into this trade, but I booked out also very early. Very early मतलब अच्छे टाइम पे निकल गया और मैं बच गया because इसका वीकली का लो नहीं टूट रहा है. इस लास्ट वीक का लो, I mean the week before this was 30.95. This is 30.25, which is not good enough, right? 730.95, 730.25, which is not really breaking the low. है ना. तो या तो हमें अगेन नैरो वीकली सीपीआर के नीचे जाएगा एंड यू नो ब्रेकआउट होगा इस ट्रेंड लाइन का, तब मजा आएगा ट्रेड करने में इसको. सो फॉर दैट दिस इज गोइंग टू स्टे इन माय शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी बिकॉज ये हमने आई थिंक एक दो और स्टॉक में भी डिस्कस किया था एक महीने पहले. नवीन फ्लोरिन इन टाइप के स्टॉक्स में ऐसा ही सेटअप था और बहुत सुंदर था. तो आज नहीं तो कल तो होना ही है, तो हम इसको बना के रखेंगे और जब भी होगा इस पे एक अलर्ट लगा के रखेंगे. सो लेट्स पुट एन अलर्ट हियर, add alert, and let's only once crossing down create. ठीक है, तो हमारा अलर्ट क्रिएट हो गया. अगर ये होगा तो हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा. ठीक है, फिर हम आते हैं सन फार्मा पे. नाउ सन फार्मा यू कैन सी वीकली लुक्स बुलिश, बट अगेन बुलिश तो है लेकिन ये में तक तो आ ही सकता है. डेली चार्ट में बेरिश डायमंड है, वो भी सेंसर्ड है, वो भी ये में तक आ गया है. और आर्ली चार्ट में देयर इज अ and bullish divergence with an uptick at the last candle, which is again not worth. So one candle in the morning should give you a bullishness, चाहे वो gap से हो कुछ भी हो. And अगर WCPR के ऊपर जाता है, then this could probably go back up again. All right, but again, not on the basis of the last candle. You need one good candle in the first hour in Sun Pharma. तभी ये होगा. ठीक है, तो प्लान वो है. अभी मैं इसको इसी में रखता हूँ, nothing much because हुआ नहीं है. So you could put an alert here and let it be. Right? Then we come to Vedanta. Now Vedanta में ये मैंने इसलिए लिस्ट में रखा है क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है. वीकली में बेरिश डाइवर्जेंस बना हुआ है, टिक डाउन हुआ ही है बट विक बहुत नीचे. इसका मतलब अगर मुझे इसका कंफर्मेशन चाहिएगा तो इट इज टू फार. सो एट रेजिस्टेंस वीकली बेरिश डाइवर्जेंस विच इज गुड फॉर शॉर्ट सेलिंग. Daily में you see there are a couple of good candles. Now as I said it is below the monthly CPR also, so इसको कुछ भी करने के लिए हमें of course CPR के नीचे सेल कर सकते हैं, but hopefully एक बुरा कैंडल या एक कैंडल आपको जो आइडेंटिफाई करेगा कि हाँ यहाँ पे सेलर्स आने वाले हैं या आ गए हैं, वो वैसा एक सेटअप बनना जरूरी है. ठीक है, या तो वो मंडे बनेगा और या मंडे गिरने के लिए यहाँ पे आपको आप WCPR का यूज कर सकते हैं. All right. Of course, you need to first observe whether this stock follows WCPR as well as some of the other stocks as well. तो वो analysis आपको खुद करना होगा उसके लिए. All right. So this again goes to a short selling setup because of the kind of setup we have in the weekly on the bigger time frames. Weekly bearish divergence. All right. Excuse me. ठीक है. Now before I go on to the stocks that y'all have,
आप उसको, आपको अगर कोई स्टॉक स्कैन करवाना है तो आप प्लीज चैट बॉक्स में लिखते रहो, और मीनवाइल विल डू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। सो निफ्टी से शुरू करते हैं। सो ये हमारा निफ्टी का चार्ट है, ये मंथली का चार्ट है। मंथली इज ऑलराइट, अभी भी couple of weeks to go, so we've got that left. वीकली में देयर इज अ बेरिश डाइवर्जेंस विद अ कंफर्मेशन विद आरएसआई सेंसर्ड। ठीक है, जब आरएसआई सेंसर्ड होता है इसका मतलब वो 11 ईएमए तक तो आ ही सकता है, जो कि आ चुका है पहली बात। थोड़ा डीपर भी आ सकता है, थोड़ा सा और नीचे आ सकता है, आएगा या नहीं आएगा ये एक बात की बात है, बट इट डजंट मीन दैट इट्स गोना बी अ वेरी ड्रास्टिक फॉल टेक्निकली। उसके लिए इसको या तो पहले आना होगा, फिर ऊपर जाके फिर गिरना होगा। ये अगर ऐसा कुछ बनाता है देन वैसे सेटअप्स बनते हैं, अभी वैसा सेटअप नहीं है। डेली में अगर हम जाएं तो डेली में यहाँ पे एक वेज बना हुआ था जो कि ब्रेकआउट हुआ, उसका फॉलो थ्रू नहीं हुआ, टेस्ट हुआ, एंड फिर फ्राइडे को ये कैंडल बना हुआ है हैमर विद अ बुलिश डाइवर्जेंस आर्ली चार्ट विद एट द गैप। सो ये डेली गैप है, गैप एग्जॉस्ट नहीं हो रहा है। तो एक और चक्कर है कि अगर डेली गैप एग्जॉस्ट हो जाता है तभी भी हमें लगता है कि हाँ चलो हमें नीचे की तरफ ट्रेड मिल सकता है, बट बिकॉज डेली गैप एग्जॉस्ट नहीं हुआ है एंड एमसीपीआर के ऊपर है, we can probably use our WCPR, I hope this is weekly, yes, के ऊपर वाला ट्रेड। So if it goes above it, we can probably use that, and for that कि कैसे करना है नहीं करना है, I'm sure everyone in my tribe knows how to do that, okay? तो वो आप ध्यान रखना, ठीक है। अब ये ऐसे भी हो सकता है, this wedge I could have drawn like this also, which basically means breakout test and fall, or false breakout and goes back up again। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन मैंने जैसे बोला मंडे अगर गैप अप खुलता है तो अगर आप यहाँ देखोगे मेरे पास रिसेंट में गैप डाउन आर्ली चार्ट में भी है। अगर ये गैप अप खुल के ये एग्जॉस्ट हो जाता है और तभी ये WCPR के ऊपर जाता है, देन दिस कुड बी टेकन ऑन द अपसाइड, है ना। हाउएवर बिकॉज मेरे एक्सपीरियंस से अगर एमसीपीआर ये R1 के नीचे आ जाता है तो उसको ऊपर वापस जाना यहाँ से लेके थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मेरे एक्सपीरियंस में, मेरे इस बैक टेस्टिंग में हो सकता है कि ये वो ना करे और यहाँ से एक बार के लिए और एक या तो यहीं पे बिता दे टाइम, या यू गेट अ ट्रेड ऑन द डाउन साइड ओनली, नॉट ऑन द अपसाइड एटलीस्ट दिस वीक। ठीक है, दिस इज अ पॉसिबिलिटी। एंड ऑफ कोर्स द अदर वन जो एमसीपीआर के ऊपर WCPR के, वो जो हमने डिस्कस किया है वो तो है ही। All right. So on a longer time frame, as I said, weekly doesn't have, Nifty doesn't have that bad a trend reversal है, जरूर है। And as I said on a weekly chart, जब मैं अगर खोलूंगा कि ये EMAs तक आ सकता है आराम से, प्रीवियस जोन्स तक, यहाँ तक आ सकता है। और अगर ये गैप डेली का एग्जॉस्ट होता है तब तो डेफिनेटली आ सकता है, ठीक है। बट आप कंफर्मेशन का वेट करो, मंडे आपको पहला couple of early candles will give you a direction, I believe. Right, now let's come to Bank Nifty. Very interesting. Let's start with the monthly chart. Now monthly chart again, आपको ये wedge दिख रहा है. Let me just make this visible, not here, not here. Something like that. Okay. ये wedge दिख रहा है. It is just going like that. इसी के अंदर जा रहा है. तो या इसका जनरल फिनोमेना होता है ब्रेकआउट ऑन आइदर साइड, और अगर ये स्क्वीज ज्यादा होता है तो जनरली नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है, which is a scary thing. All right. Again, 10 days left to go for the month to end. So we've got plenty to think about and plenty to talk about, but do not hurry into anything. You can see monthly में भी divergences बहुत हैं, and this is waiting to kind of give you a correction. In the weekly chart इसको और clearly दिख रहा है आपको कि कैसे squeeze हो रहा है, और आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे एक टेस्ट हुआ था, इस वीक का पूरा बुरा कैंडल बना है, एंड दिस कुड गिव यू अ फॉलो थ्रू। अगर ये फॉलो थ्रू आता है मंडे को, अगर इसका लो टूटता है एंड इट फॉलोज थ्रू, then there is a scare of breaking this, लेकिन only if it follow through। अगर ये गैप अप खुल जाता है लगभग 500-600 पॉइंट या ऐसा कुछ, कोई भी कारण से, मुझे नहीं पता, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, अगर गैप अप खुल जाता है तो आई थिंक ये कैंडल का सिचुएशन बदल जाएगा एंड मे बी दिस विल नॉट फॉलो थ्रू। ठीक है, सो वो ध्यान रखना आपकी ये गैप अप या गैप डाउन खुलता है क्या। नाउ इन द डेली चार्ट ऑफ कोर्स दिस वाज अ फैंटास्टिक एंट्री हियर, कि डेली में जब ये ईएमए पे आया था, देयर वाज अ bearish kind of a divergence in the spot chart anyway, and ये नीचे तक आया और ये आपको R1 के नीचे ट्रेड दिया था, आपको WCPR के नीचे also, but again there is a series of bullish divergence in the early chart with censorship, so unless it opens gap up
अगर गैप अप खुलता है तो यहां तक आ सकता है, मैं आपको अर्ली चार्ट खोल के दिखाता हूँ. सो दिस इज योर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इन बैंक निफ्टी. सो fall, test, fall, breakout, again fall. So is this a false breakout? That is a question that you need to ask. All right. Now, ये या तो यहाँ पे वापस टेस्ट करके गिरे, जो कि ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन फिर भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. और या हम अगर इसको WCPR लगाते हैं, सो लेट मी जस्ट चेक, दिस इज WS. अगर यहाँ पे लगाते तो हाँ एग्जैक्टली, सो दिस इज मैं बोल रहा था, यहाँ तक टेस्ट कर ले मंडे को एंड फिर फॉल हो, तभी इट मेक सेंस. और यार ऐसे ही मंथली सीपीआर के नीचे गिर जाए गैप डाउन खुल खुल के, वो भी that's also okay. All right, so either way that is something that you need to keep an eye out for. Let's see if you can draw a trend line, something like this. Yes, so इसको भी आप यूज कर सकते हो. फिलहाल अगर MCPR के नीचे जाता है then also that can be taken. So again मैं ये 2 महीने से बोल रहा हूँ, अभी वापस बोल रहा हूँ कि compared to Nifty, Bank Nifty is a little more poor in terms of the chart. Nifty is not that bad, but Bank Nifty is on the bad side. अभी तक इसमें बैड ज्यादा है, बुलिशनेस कम है. निफ्टी में बैड है लेकिन उतना बैड नहीं है, इफ आई कैन पुट इट इन अ वेरी लेमैन लैंग्वेज. ठीक है, एक बार जल्दी से मैं स्पॉट चार्ट भी खोल लेता हूं ताकि जस्ट एक इंफॉर्मेशन हमें हमें समझ आ जाए. तो ये अब इनवैलिड हो गया है. एक्सपायरी टाना, या आई थिंक यस, सेम प्लान राइट, सेम प्लान. एक बार निफ्टी का भी खोल लेते हैं स्पॉट चार्ट. या ओके, निफ्टी में एक्चुअली यू कैन ड्रॉ लाइक अ सपोर्ट जोन हियर आल्सो, इसको भी आप यूज कर सकते हो. ठीक है, दिस अ ब्यूटीफुल सपोर्ट. लेट्स सी हमने जो निफ्टी का फ्यूचर चार्ट में क्यों नहीं मिला मुझे. स्लैंटिंग लाइन ज्यादा है इसमें. ठीक है, ऑलराइट, सो दैट इज इट फॉर निफ्टी बैंक निफ्टी. अब तुरंत हम स्टॉक्स पे आ जाते हैं जो आपने हमें बोला है देखने के लिए. सो लेट्स ओपन स्टॉक का लेआउट. So we've got persistent system. Persistent system, yes, gap test. वेरी वेरी शेडी डाइवर्जेंस है. ये लिस्ट में हो सकता था जस्ट बिकॉज इट इज बिलो मंथली सीपीआर. आई वाज लाइक कि वाइड सीपीआर भी है, सो आई डोंट नो इफ आई वांट टू कीप इट इन द लिस्ट एंड ऑल दैट. सो मे बी अबव मंथली सीपीआर बट दैट्स टू फार. अगर आपको इसका फॉलो थ्रू पे लेना है तो आप WCPR को यूज करना. ये मेरा एडवाइस रहेगा. बट अगेन बेरिशनेस इतना नहीं है जितना बुलिशनेस है. आई थिंक if I had to, then I would probably be thinking about long setups in this. All right, that would be the plan. Let's plot my WCPR. पहले वाला, हाँ यहाँ से सेलिंग था, फिर यहाँ पे सेलिंग था, यहाँ S1 से गया. Now you can use this WCPR or draw like a point of interest somewhere here on a smaller time frame and maybe can enter, but you need a follow through. ठीक है, still on the bullish side because look at this beautiful daily gap अभी टेस्ट हुआ है and उसमें shady divergence है लेकिन है तो सही. All right, maybe you can start maybe draw something like that. अर्ली चार्ट में आपको दिखेगा ये ट्रेंड लाइन. सो अगर हाँ, सो अगर इसके ऊपर भी जाता है सो इफ इट goes like, I think maybe something like this could be like some kind of a test. Yeah, this could be some kind of test. Either way, you can plan that out. ठीक है, कैसे खुलेगा उस पर डिपेंड करता है. Then I've got IB real estate. ये मेरे पिंक लिस्ट पे है, मतलब वॉच लिस्ट पे है. सो India Bull Real Estate, if you see on my weekly chart, there's a downward trend here. Of course, if I go to the monthly chart, we've also discussed this thousands of times कि बहुत सुंदर यहाँ पे बुलिश डायमंड था, ऊपर गया, यहाँ तक तो आ ही सकता है. अभी भी प्लान वही है लेकिन एंट्री कैसे करें. सो यहाँ ब्रेकआउट हुआ, इफ यू कैन सी हियर ऑन द डेली चार्ट, है ना, ब्रेकआउट हुआ. अब यहाँ पे CIP दे रहा है वीकली चार्ट पे इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का. गुड हैमर. नाउ ऑफ कोर्स यू नीड फॉलो थ्रू एंड ऑल ऑफ दैट. लेट्स ट्राई एंड फाइंड समथिंग हियर. देयर इज अ गैप डाउन हियर, सो अगर ये एग्जॉस्ट करता है दैट्स अ गुड साइन आल्सो. और अगर हमें ट्रेडिंग के लिए करना है तो हम आर्ली चार्ट को खोल लेते हैं, एक बार एक प्लान देख लेते हैं. मंथली सीपीआर पे ही है, तो अगर गैप अप खुलता है, अगर गैप अप खुलता है तो दो काम होगा, एक तो गैप एग्जॉस्ट होगा, दूसरा मंथली सीपीआर के ऊपर भी चला जाएगा. सो यू कैन यूज मंथली सीपीआर फॉर योर
entry as well. ठीक है, so that could be a good plan. So this has to open, लेकिन इस प्लान को एग्जीक्यूट होने के लिए आई थिंक गैप अप खुलना एक बहुत जरूरी हो जाता है. अभी खुलेगा कि नहीं है मंडे ही पता चलेगा ऑफ कोर्स, है ना. सो दैट इज इंडिया बुल रियल एस्टेट. UBL 012 as you're asking me if there's 012 in UBL. Let's check. I think UBL also came in my scan, but there's a reason why. Yeah. So UBL का yes, there is a 012 012 probability है. तो हमने ये लास्ट टाइम यहाँ पे रखा था कि भाई ये अगर करके ये लेवल अगर टूट जाए तो हम इंटरेस्टेड हैं. इफ यू रिमेंबर दिस येलो हमने लाइन बनाया था कि इसके ऊपर चला जाए तो हम इंटरेस्टेड हैं. वो हुआ नहीं, फिर ये नीचे आया, फिर एक डायरेक्शन बनाया, फिर 012. लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे मेरे पास है कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस पे है. ठीक है, एक तो मंथली सीपीआर पे है. सो you can see the monthly CPR being at the resistance level. ठीक है, तो a lot of doubt creating things are here. So yes, हो सकता है ऊपर की ओर करना है, लेकिन मैं या तो ये महीना खत्म होने के लिए 10 दिन वेट करूंगा, या मैं वही गैप अप अगर कुछ खुले तो मैं गैप को नेक्स्ट डे यूज करना शुरू करूंगा. ये मेरा प्लान होगा. ठीक है, और ऑफ कोर्स ये जो लाइन है, ये जो येलो जोन है, इसी को मैं एक्सटेंड कर दूंगा. अगर इसके ऊपर चला जाता है तो मैं उसको यूज कर लूंगा, है ना, इसके ऊपर. लेकिन रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट ऑन क्लोजिंग बेसिस. First close, you can use the hourly chart for that also. First close CIP and then enter. I think that would be much better. ठीक है, that would be my मतलब advice. Of course, I'm no one to give advice. I'm just analyzing my stocks. If you feel that this is something that you like, plot it on your own system. People who are not here from my tribe, plot it on your own system and verify. This is just education. Yes, Johnny, I think that is what I said, so I would wait for this to kind of breach for anything that I would like to. Yes, but it would be on the buying side. Unless something changes, because है resistance पे, इसीलिए मैंने इसको डाला नहीं, क्योंकि अभी तक confirm नहीं हुआ है. It is just there. I would like to watch it, but I don't want to trade it right now. BPCL. Let's check BPCL. Yes, BPCL वीकली EMA तक आ गया है या आ रहा है. आ गया है या आ रहा है कब, हम कंफर्मेशन बाद में ढूंढेंगे. लेकिन हेड एंड शोल्डर, इफ यू सी आर्ली में शोल्डर हेड शोल्डर था, उसका ब्रेकआउट हो गया. अगर इसका मुझे टारगेट बनाना होगा, सो मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव टारगेट बनाता हूँ. सो हेड एंड शोल्डर का टारगेट इज ऑलमोस्ट डन. मे बी वन मोर रीच, वन मोर पुश टू काइंड ऑफ गेट टू द टारगेट, है ना. Good thing here is that it is below the monthly CPR. So if in case the first hour takes resistance from the CPR in the weekly chart, WCPR I mean, या गैप डाउन खुलता है या कुछ ऐसा होता है जो आपको अंदाजा दे दे कि हाँ भाई अब रेडी है, then you can probably sell this for another test of this level. ठीक है, और एक और चीज, क्योंकि ये ऊपर नीचे की ओर, of course if you not entered already then you're a little late, but anyway, अगर ये ऊपर की ओर नहीं जाता है, गैप अप नहीं खुलता है, गैप डाउन खुल के नीचे जाता है, देन मैंने जैसे पहले भी बोला है कि बहुत बार द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस कमिंग टू दिस S1 इज वेरी हाई, व्हिच इज आल्सो WEMA. ऑलराइट, सो दिस इज आल्सो वन थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड. ऑलराइट, सो बट इंस्टेड ऑफ अज्यूमिंग कि ये आएगा, आई गेस मैनेज योर ट्रेड्स अप्रोप्रिएटली. आप सबको आता है कैसे करना है, आपको जस्ट खाली सिस्टम फॉलो ढंग से करना है. ठीक है, ऐसा लेट मी keep this drawn. Just let me change the color so that I don't get confused. Okay, so BPCL is there. I could probably use it as a blue list rather than purple list, because एक बार target already आ चुका है इसका. So risk reward की बात कर रहा हूँ. All right. Okay, guys, I think that's about it. I think all questions done and dusted. Thank you very much. Have a great weekend, whatever left of it, and of course we've got a brilliant week next week. उसके बाद हमारे कलर फेस्टिवल शुरू हो जाते हैं, हॉलीडे पीरियड शुरू हो जाते हैं. एंजॉय योर टाइम, एंजॉय योरसेल्फ. हमारा बैच शुरू हो रहा है सैटरडे को 23rd. Do not miss it. If you really want to learn, just go ahead and enroll for it. Thank you very much. Take care. Bye bye.